Bismillahirrahmanirrahim. This is your teacher Miss Ebadut, and today we are here again with another lesson, and this lesson is about number. So today we're going to talk about number 6. What I want you to learn by the end of the lesson, that you will be able to recognize number 6. आपको नंबर 6 की पहचान हो जाएगी, ठीक है. उसके बाद यू विल बी एबल टू ट्रेस नंबर 6, यानी कि बाय द एंड ऑफ द लेसन यू गाइज विल बी एबल टू ट्रेस नंबर 6 एंड देन यू विल बी एबल टू काउंट अप टिल नंबर 6. यानी कि हमारे लेसन के इख्तिताम पर आप लोग काउंट अप टिल 6 करना शुरू कर देंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी. दिस इज़ द स्टोरी अबाउट नंबर 6. किस चीज़ के बारे में ये है स्टोरी? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ नंबर 6. देयर आर मैनी न्यूली ग्रोन फ्लावर्स इन माई बैकयार्ड. व्हेन आई काउंट देन दे टर्न्ड आउट टू बी 6 flowers. How many flowers are there in my backyard? 6 flowers. On a closer look, I noticed that there are 6 bees buzzing around the flowers. कितनी bees उड़ रही थी flowers के around? 6 bees were flying. Oh wow! They are drinking flower juice and making honey with it. क्या कर रही थी वो? They were making honey. Bees have 6 legs. कितनी legs होती हैं bees की? 6. आप लोगों ने bees देखी है ना? Their hive also has 6 sides. और जो bees का घर होता है ना, उसकी भी 6 sides होती हैं. There are other insects around the flowers as well. और बहुत सारे insects भी थे वहाँ पे flowers के इर्द गिर्द. कौन कौन से थे? Grasshoppers and ladybugs. कौन कौन से थे? Grasshopper और ladybugs. And all of them have 6 legs. और सबकी कितनी legs थी? 6 legs थी. It was a lovely sight. और उनको देखना बहुत अच्छा लग रहा था. Okay. So now we have different flashcards on the screen. We're going to count them and learn to count up till number 6. Let's count. So in the first picture we have turtles. Let's count them. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. How many turtles we are having? 6 turtles. Now in next picture we have number 6 and tomato. Let's count the tomatoes. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. How many tomatoes? 6 red tomatoes. Okay. Now next move towards the next picture. ये कौन सी picture बनी हुई है? These are sea horses. क्या कहते हैं हम इस picture को? We call them sea horses. Let's count the sea horses. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. How many sea horses? 6 sea horses. And in the last picture, how many baby owls we have? Let's count. 1, 2, 3, 4 and 5 and 6. How many baby owls do we have in the last picture? We have 6 baby owls. So total हमारे पास कौन सा key number है? हमारा key number है number 6. Let's look at the board again. कितने फ्लैश कार्ड्स थे हमारे पास पिक्चर्स के? हमारे पास पिक्चर्स के कितने फ्लैश कार्ड्स थे? 6 turtles, 6 tomatoes, 6 sea horses and 6 owls. Okay, playgroups. This is what number 6 looks like. ठीक है? किस तरह का होता है number 6? This is how number 6 looks like. ठीक है? हम curve बनाते हैं और then we come inwards. Okay, use sandbox to trace number 6. अगर आप लोगों के पास सैंडबॉक्स है तो यू कैन डेफिनेटली ट्रेस नंबर 6 इन द सैंडबॉक्स. अगर आपके पास सैंडबॉक्स नहीं है, यू कैन ऑल्सो यूज़ राइस एज वेल, कि आप लोग जो हैं एक फ्लैट सरफेस पे सैंड या राइस रख लें और उसके अंदर आपने नंबर 6 को ट्रेस करना है. ठीक है? फॉर नाउ यू आर लुकिंग द नंबर 6 ऑन द स्क्रीन. आपने आई विल गोइंग टू डू इट विद पेन एंड यू गोइंग टू यूज़ योर फिंगर एंड वी गोइंग टू ट्रेस द नंबर 6 ताकि आपको उसकी फॉर्मेशन का पता चल जाए. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टिप on the point and we're going to come down in curve and go back inside. ठीक है? This is how we make number 6. Let's count the number of parrots on the screen.
हमारे पास कितने स्क्रीन के ऊपर पैरेट्स बने हुए हैं? लेट्स काउंट देम. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. How many parrots we are having on the screen? We are having 6 parrots. Okay, so this is the activity we are having. For this activity, what do we need? We need a piece of paper, we need glue and we need marker. Basically, what is the activity about? We're going to cut 6 circles. We're going to cut 6 circles and we're going to connect them together to make a beautiful caterpillar. So, I have already cut the 6 circles with me here. Let me show you. So, I am having colorful circles here with me and I am also having blank paper with me. और फिर हम इनको इसके ऊपर कनेक्ट कैसे करेंगे प्ले ग्रुप्स? वी गोइंग टू कनेक्ट देम, असेंबल देम थ्रू ग्लू एंड उसकी डिटेलिंग हम कैसे करेंगे? उसकी डिटेलिंग हम मार्कर से कर लेंगे. ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा मेसी भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है. एंड दिस विल बी द एंडिंग पिक्चर. हमारी एंडिंग पिक्चर में ऐसा कैटरपिलर बन जाएगा. लेट्स काउंट द सर्कल इन द कैटरपिलर. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. How many circles does this caterpillar has? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Excellent playgroups. Okay, so this is the formation of number 6. Use your finger or the crayon, take a neat paper and use a crayon or your finger to trace the number 6 so that you can get the idea of the formation of number 6. Let me show you. We're going to come down in slant like this and we're going to up, curve and inside. ठीक है, ऐसे हम उसको बनाएंगे. Let's do it one more time for you. Come down slant, curve, go upwards and inwards. One more time. Come down slant, go upwards in circle and come inside. One more time. Come down slant, go upward and come down in circle. Okay, so this rest of the things, rest of the tracing you can do by yourself. Let's count the spoon here. हमारे पास कितने spoons हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. How many spoons do we have here? We are having 6 spoons on the board. Okay, now this is the assessment. In the assessment blocks, we are going to check whether we know what comes after, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें numbering up till 1 6 आ गई है कि नहीं आई है. Let's count 1 and 3. What comes after 1 play groups? After 1 there is 2. What is the number? Number 2. All right. Now in this caterpillar, 3, 4 and what will be the number coming after 4? It is number 5. What is the number? Number 5. Okay, here we have 2, 3 and what will be the number? 3 के बाद कौन सा number आएगा हमारे पास? 3 के बाद आएगा number 4. कौन सा number आ जाएगा? Number 4. And in the last puzzle block, what do we have? 5 and what comes after 5? We just told you. अगर आप कभी भूल जाएं कि कौन से नंबर के बाद कौन सी चीज़ आती है, so you are always having your fingers with you to help you in counting. Let's count कि what comes after 5. 1, 2, 3, 4, 5 and what comes after 5? This is number 6. क्या आता है after 5? Number 6. So what we're going to write down here? We're going to write down number 6. Okay. So you are having homework on the board. आपके पास क्या homework है? What I want you to do at home. आपने क्या करना है? Count 6 similar glasses at home. जो glasses का set होता है ना, वो usually 6 numbers में होता है. So what you going to do? आपने random glasses को नहीं count करना. आपने glasses with the same design count करना है. Like अगर you going to count the metal glasses, you going to only count the 6 metal glasses. And if you going to count the crystal glasses, then you only going to count the 6 crystal glasses. Oh, all right. And what else do you going to do at home? You're going to revise first 5 numbers, first 6 numbers orally, like I am doing right now.
1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is how I do it orally. So you're going to revise 1 till 6 orally. Okay. This is all playgroups for now. Thank you for your time. See you in next lesson. Allah Hafiz.